रसूलुल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सटी, कॉन्फ्रेंस चेयर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी साहब, मेरे पास डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी मेरे एक उस्ताद मोहतरम के साथ जिनका मेरा एक बड़ा लाइफ लॉन्ग रिलेशन है। ही वॉज माई टीचर एट गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये जब तशरीफ़ लाए तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो आई वॉज नॉट विजुअलाइजिंग दिस कि आपकी इस कॉन्फ्रेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और मुझे इसकी आपकी कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स भी नहीं पता थी। बस वो मुझे उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस, विल बी शेयरिंग थॉट्स ऑन फ्यूचर। तो आई थॉट कि आप एडेप्टेबिलिटी की बात करेंगे, आप कुछ और बातें करेंगे, लेकिन एनी हाउस आई एग्रीड टू देम दैट आई विल कम एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव कम हियर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आई विल हैव अ रिग्रेट फॉर दिस कि डॉक्टर साहब ने जब बात करनी शुरू की तो उनकी अंदाज़े बयान बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग थी कि आते ही पहले जुमले में अगर कोई ऑडियंस को अपने साथ जोड़ ले, और वो भी तलबा की ऑडियंस को, तो वो शख्स बहुत सी सलाहियतों का मालिक होता है। एंड डॉक्टर साहब, आई एम कन्विंस्ड दैट यू डिड इट इन वन सेंटेंस। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब, वाइस चांसलर एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आज़म, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई नो हिज वर्क एंड वी आर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू यूनिवर्सिटी एंड आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय डॉक्टर साहब इन एस्टैब्लिशिंग दैट यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक साहब, डॉक्टर फ़हीम आफ्ताब साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अख्तर साहब, मेजर रिटायर्ड वसीम प्रेसिडेंट ऑल फोर्सेस वेटरन, ब्रिगेडियर मोहम्मद साजिद खोखर साहब और डॉक्टर शाहिद साहब, मैं मोहतरम उस्ताद-ए कराम, मेंबर्स ऑफ फैकल्टी एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई डू अंडरस्टैंड कि आपका जो इस वक्त गर्मी है और आपके लिए तकलीफ भी है, और आपके ब्लोइंग फैंस खुद डिपिक्ट कर रहे हैं कि इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, बट मैं आपकी दिलजमी, आपके इंटरेस्ट को अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरह से मुस्तकिल मजाजी के साथ आप स्टूडेंट्स ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। इट इज़ अगेन रियली अप्रिशिएटेबल। आई रियली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन टू दिस। Ladies and gentlemen, your today's topic, that preparing your next generation for future, it's an interesting yet very complicated subject to speak upon. Now, for a person like me, when I started my schooling, there was no digital platforms available. Our learning in our age, when we learned, it was the copy, it was the pencil, it was the book. But by the time we came to our professional life, the first challenge was the strength of adaptability, whether I could leave the book and go to that specific screen in which I needed a certain set of skill. Somehow I didn't have it. Now this was a test for me, whether I can prove that I have adaptability. As you all know, that the species, those who live on earth, if they don't have the capacity to adapt to the weather, they extinct, they diminish. The sudden demise happens. If there's an extreme weather of cold, they die. If there is an extreme hot weather, they die. But the creature which has the capacity to adapt, it survives. So the power of adaptability is the key to it.
I am a textbook case for not preparing myself for future. I kept myself very primitive. I was with those books and I thought probably something will automatically happen. I was listening of these law sites. I am a lawyer by profession. I was listening of these good sites for reading books. But in backdrop of my mind, there was a certain fear of machine. And that fear still persists. So for young students, boys and girls, you are fortunate enough that you have been educated in that era when machine learning is the learning and you are learning it. And I will suggest one more course of action for you. We as humans are in habit of creating some things, and I'm borrowing this argument from one book which I've recently gone through by the name of Nexus by Yuval Noah Harari, the same author of Sapiens and Homo Deus. You might not agree with his religious thoughts because he has a different concept and he talks of religion as a creation of man, but I take it as a divine thing. He comments on biblical theories for certain reasons. He comments on Quranic verses with certain explanations. Nothing offensive, nothing blasphemous in it, but still he has his own approach. And he writes it down, but I took that case study here. He says that in Greek times, we humans created a mythology in which